तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फाइन आर्ट का पहला चैप्टर के 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एजुकेशन नेक्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि हम इसको और बेहतर बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद। तो पहला क्वेश्चन है, द ट्रेडिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग इन इंडिया बिगन मेनली ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ विच आर्ट। कौन सा आर्ट का डेवलप हुआ था मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग इन इंडिया? स्कल्पचर, कैलीग्राफी, राइटिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, आर्किटेक्चर। आंसर सी, राइटिंग एंड डॉक्यूमेंट्री। सेकंड क्वेश्चन है, मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग वर यूजुअली क्रिएटेड ऑन विच मटेरियल बिफोर द अराइवल ऑफ पेपर? सिल्क, पाल्म लीफ, कॉटन क्लॉथ, लेदर। ऑप्शन बी, प्लाम लीफ। थर्ड क्वेश्चन, द इंट्रोडक्शन ऑफ पेपर इन इंडिया वॉज अराउंड विच कंट्री? 10th century, 12th century, 14th century, 8th century. Answer A, 10th century. What were the painted manuscripts generally called in ancient India? A, French Pothys, scroll, murals. Option B, Pothys. Which region is considered the earliest center of plum leaves manuscript painting? राजस्थान, ओडिशा, कश्मीर, गुजरात। ऑप्शन बी, ओडिशा। The Jain manuscript painting tradition flourished mainly Bengal, Rajasthan and Gujarat, Kerala, Kashmir. Option B, Rajasthan and Gujarat. Question 7. The earliest illustrated Jain manuscripts were written in which script? Option D, Ardha Magadhi. Which of the manuscripts considered one of the most famous Jain illustrated texts? भगवता पुराण, कल्प सूत्रा, रामचरितमानस, गीता गोविंद। ऑप्शन बी, कल्प सूत्रा। A common feature of early manuscript painting was the use of large canvases, bright colors and bold outlines, oil paints, metallic sheets. Option B, bright colors and bold outlines. The painting tradition in Buddhist manuscript foreshadowed most under which dynasty? Maurya, Kushan, Pala, Gupta. Pala. The Pala manuscript painting are associated with which region? Bihar, Bengal, Punjabi, Rajasthan, Tamil Nadu. A, Bihar, Bengal. The Astharika पंजाब पारमिता, ये जो विराम है, मैन्युस्क्रिप्ट बिलोंग टू द विच रीजन?
Hindu, Buddhist, Jain, Sikh. B. Buddhist. The color used in traditional manuscript were obtained from option B. Natural minerals and plant. Gold and silver were used in manuscript mainly for highlighting and important figures. गोल्ड गोल्ड और सिल्वर यूज किया जाता था हाईलाइटिंग एंड इम्पोर्टेंट फिगर. देख लो अमीरी थी. विच पेंटिंग ट्रेडिशन इज लिंक्ड टू द गीता गोविंद मैन्युस्क्रिप्ट. ऑप्शन डी. ओडिशा स्कूल. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इलस्ट्रेशन मैन्युस्क्रिप्ट वॉज. Option B. The help readers understand the text better. पढ़ने वाले को समझ आ जाए बेटर टेक्स्ट में. Which is the usual orientation of Plumley's manuscript. B. Long and narrow. Which color was commonly used as the background in Jain manuscript? C. Red. Painted scrolls in eastern India were known as Patachitra. The famous Perfection of Wisdom manuscript refer to Prajnaparamitra. Which dynasty is closely connected with the growth of Buddhist manuscript painting? C. Pala. The dominant color of scheme of Pala painting is dark with earthy tones. Color scheme थी dark and earthy tones. What is the term of pictorial interpretation of stories on manuscript? Illustration. Jain manuscript commonly depict which Tirthakara? D. All of these. Mahavira, Adinath, Parshvanath. The border in Jain manuscripts were usually filled with decorative motifs. Miniature painting first flourished strongly in the which painting tradition? Jain manuscript tradition. Which factor contribute the decline of manuscript painting? Printing technology. The term pothi refers to a manuscript bound in long rectangle form. Illustrated manuscripts were mostly produced in monasteries and temple school. The art of illustrating manuscript is considered as the foundation for B. इंडियन मिनिएचर पेंटिंग. तो यहाँ पर द एंड होता है. लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के पास. हम ऐसे ही आगे से आगे
बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।